Welcome, sir. It's our pleasure to have you in this 2 days national conference of capital markets. We have the presence of Regional Council member CA Saurabh Ajmera and CA Vijender Jain with us in this session. Thank you very much, sir, for your presence. स्टॉक मार्केट देता भी छप्पड़ फाड़ के और लेता भी थप्पड़ मार के. Am I right? And where the purpose lies, we have this 2 days national conference to digest this fact and to know how to invest for longer terms for wealth creation. If someone is interested into trading, then what are the fundamentals? What are the strategies? So, with this, I request Daya ma'am to please come on the dais for the opening remarks. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. Myself, CA Dayamit Bansal, Chairperson of the Vasai branch. On behalf of WRC of ICI, I welcome to each and all of you. It's given pleasure that today now this topic is decoding the capital market. What's the planning, what's the strategy we follow? As an investor, we want to know, and as a professional as well as. Capital market today play a vital role for shaping the financial and economic growth. Understanding this capital market planning with the strategy for the crucial for the investor and the professional. For that, we have our today's speaker, Ashish sir, with us. We are privileged that sir give our valuable time for all the professional chartered accountant. He will help us for the capital markets, share the practical, insightful, discuss the strategy to blend the professional expertise with the smart investing. Sir, I welcome you on behalf of the WRC. I welcome each and everyone, all the dignitary on the dais, of the dais. Thank you and look forward for energetic and knowledgeing session. Thank you. Thank you very much, ma'am. So, this is the last session of this 2 days national conference. I request CA Saurabh Ajmera, past secretary of WRC and current regional council member, and CA Vijender Jain, regional council member, to please come on the dais to felicitate our today's speaker, Ashish Baheti ji, with us. Please have a big round of applause. Energy और तालियां रुकनी नहीं चाहिए. This is the last session of this 2 days national conference. Thank you very much, sir. Over to you, sir. Over to you, sir. I think today's speaker does not require any formal introduction, but as a protocol and as part of the process, I request Ritu ma'am to please have an introduction of our today's speaker, and then we will resume again. Thank you, sir. Thank you so much, Sahil bhai. And I really want to thank Vijendra bhai and Saurabh bhai for this opportunity. I feel very fortunate to introduce such a learned speaker, CA Ashish Baheti sir.
Sir brings over 18 years of experience in the stock market and currently serves as a head of research at Profit Mart Securities. He has held key roles at JP Morgan, JP Capital, and Quent Express Technologies. His expertise lies in partnering with the family offices and quantitative trading firms to develop sophisticated HFT and algorithmic strategies and solutions. A CA, CS, LLB, and AFP, Ashish sir also holds certification in Python and data science. A regular prime-time panelist on leading business news channels. With this, I request everyone to welcome him with a huge round of applause. Sir, the dais is all yours. Good afternoon, everyone. Thank you, WRC, Saurabh Bhai, and the entire team to inviting me for this session. I'll start with this, how I see the market or how I perceive the market. So I see the market as a big jigsaw puzzle, and इस puzzle में जितने pieces you're going to fit, the picture will be better and clear. So though we all are CAs, we all are expert in reading balance sheets, we are expert in fundamental, but I think in today's volatile scenario, fundamental is not at all sufficient. We have to align ourselves with the market. So we have to have more tools to gauge the market. So yes, technical analysis is one of those tools. Reading data or quantitative analysis is another tool, like reading your option chain data, F&O data, or other data sets. Then economy, risk management, fundamental, money management. So जितने pieces आपके board पे ज़्यादा आएंगे, उतनी ये money bag की picture clear होगी. Let me start with one wonderful chart. Since it's a 2-day capital market session, I'm sure ये chart आपने 2-3 बार देख लिया होगा अभी पिछले 2 दिनों में. Okay. Usually, every fundamental guy, every fund manager starts with this chart. And can anyone tell me what is this chart of? It's nice, beautiful, up-sloping chart. Can anyone tell me what this chart is? Candlestick, index, which? So it's a Nifty chart. It's a Nifty yearly chart. Last 20 साल के and it looks so beautiful. Okay, and this chart itself gives you both hope, motivation, and guilt at the same time. Motivation, कि wow, Nifty has performed so well, and guilt, shit, मैंने नहीं लगाया. Sorry for my language. I'll be a little more candid here because I think the space is such कि I can be. So you'll have a guilt कि वो मैंने क्यों नहीं लगाया. Nifty has given 15%, 18, 16% CAGR return. And why I have not invested, why I have invested in some property in Pune or my hometown, or I have taken some extra flats, I should have put here. And it gives you motivation also. Wow, Nifty has given such a fabulous return. And this is the chart with which every fundamental guy, every fund manager, every mutual fund guy will going to start a session. So that's why I've chosen this chart. But as they say, the devil is in details. So here, for us, the devil is not in details, but the devil is in the volatility. वो chart बहुत अच्छा लगता है, but this chart, this is also a Nifty chart, but a weekly chart, or which is of 1 year. So what return Nifty has given last 1 year? How Nifty is moving? We all know it's moving absolutely sideways. कोई पैसे नहीं बन रहे, portfolio भी वहीं का वहीं खड़ा है, एक साल में कुछ भी growth नहीं दिख रहा, isn't it? So this is the chart what we have to discuss rather than the first chart. वो first chart देखने में बहुत सुंदर लगता है, but actual में जब working होती है तो इस chart पे होती है. जब हमको portfolio में green नहीं दिखता है, then we hit the panic button. Okay. Let's start with the second chart. This is of Reliance Industries. Again, the same story. 1 year, absolutely flat. Is there any return? No. Let's go to the third chart, which is of TCS. Darling of all,
every fund manager used to swear by it. Biggest wealth creator or one of the biggest wealth creators. India, IT poster child. What return is it showing? In fact, it is trading at 3 years low. 2021 के जो point थे, so this was the 2021 का point. Stock is trading at that level only. And इसके बीच में कंपनी ने 2 बार buyback किया, and buyback was at 4,500 price. And today it is trading below 3,000. So what the point I'm trying to draw here is, yes, on the longer horizon, when we see market, when we analyze the market, it looks really good, but we don't trade a longer term. We don't see the market on a longer term. Why? Because the price is readily available with us. What happens? Kal subah Trump tweet aayega, market will going to correct by 200, 300 point, you're going to reevaluate your entire portfolio. You're going to check kaun se stocks profit mein hai, pehle usko nikalo. Isn't that happens with all of us? We'll hold on to our losers, we'll exit the first, our winners. See, I'll tell you one thing. Whenever a stock, specifically a stock, enters, okay, these are the stocks which I've picked, hand-picked or cherry-picked. These are large cap stocks. Okay, many have that belief that large cap stocks mein aap trade karo to it's, invest karo to it's good. But these large cap stocks are not meant for investment, I'll say. Why I'm saying this? See, these are the stocks which is already grown up so far. You cannot make a wealth or a fortune by investing in these stocks. See, it's a classic case, or specifically a stock which enters into F&O, you should be very cautious for those stocks. कोई भी stock F&O में घुस जा रहा है या F&O में है, then that is a stock which is best suited for trading rather than investment. A classic case of a stock named Navin Fluoro. Stock was absolutely doing nothing. In fact, it was underplaying or underscoring even its own sector. SRF, Tata Chemical, इस sector के जो stocks थे, they were outperforming it. But what was happening with Navin Fluoro? In fact, a lot of negative news used to come. That CEO resigned, and then F&O stock hai, obviously it used to hit lower circuits and continuously selling. Stock 2025 में February में F&O से निकला. And you can see the growth. Nothing changed much of this stock. All the negative news are still there. Nothing changed in the sector also. You can check SRF or Tata Chemical stocks. They are still trading at that price zone only. But what happened to this stock? Feb 25 में निकला, when it exited, it was almost F&O से जब इसकी exit हुई, it was trading at 3,600. Today this stock is close to 6,100. So almost how much percent return? 70% return since February till today. So whenever you see a stock, or at least your portfolio stock entering into F&O, that is the time at least there should be some warning bell should sign in. कि अब ये stock आपकी core portfolio से ज़्यादा, you should use it as a more of a trading bet. Two things, F&O obviously gives you that shorting opportunity, and F&O gives you the leverage of options. You can use that to amplify returns. But what about, trading in mid cap, small cap? That is more dangerous zone, because that is the place where most of the wealth is getting destroyed. Because of the non-corporate governance or a poor corporate governance, many small cap companies. So how do we trade the small cap, mid cap? Globally, the best suited way to trade small cap, mid cap is through ETF. And that is the best way to trade the small cap, mid cap. Now, coming to the black swan events. What are black swan events? What are black swan events? जिनके होने की probability is 0.001%. Okay. I started my career professionally in 2008 with JP Morgan. And उसके बाद से some of the events which have shaped up. Immediately when I cleared, global financial crisis hit. Global financial crisis means US की economy was tanking, was almost on the verge of collapse. Lehman Brothers, 108-year-old bank, getting overnight bankrupt.
Mumbai terror attack, pigs, debt crisis. Pigs is Portugal, Italy, Greece, and Spain. So these countries were about to default on their government G6. Brexit happened, taper tantrums, quantitative easing जो अभी वापस चल रहा है कि US अपने loans को वापस आगे बढ़ाए, debt की ceiling ऊपर बढ़ाए. So this happened somewhere around 2013 also. Same story. And that time also, market was very fearful. Demonetization, long-term capital gain, reintroduction, LTCG आया था equity पे, somewhere around 2018 के budget में. These are the events which is like pre-2020. 2020 के बाद के तो सबके events सबके fresh memory में. COVID happened, we have almost seen almost kind of 3 world wars, or 2 world war, 1 nuclear country getting into a war. We have seen negative crudes, we have seen nickel going from 20,000 to 120,000 in 3 days. Okay, we've seen Russia, Ukraine, we have seen Trump tantrums. All these events, what was the impact of these events? Each and every event had an impact of at least 30 to 60% in our portfolio. You know, we call them black swan events, जिनके होने की probability 0.01 है. But if you'll see every quarter or at least every 6 months, at least every year तो एक ऐसा event हो रहा है जिसमें 30 to 60% तक का portfolio wipe out हो रहा है. And if you're seeing such a wipe out, it gets very difficult to hold on to your long-term stocks which you bought. जो आपने 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए लिया था, but अगर वो stock 30% गिरते हैं, तो everybody hits that panic button. And what happens? Obviously, we first sell our winners. क्यों? क्योंकि obviously उसमें profit दिख रहा है, इसको तो बचा लो. जो तो यस बैंक बन गया वो तो बन ही गया है, अब HDFC में तो पैसे बुक कर लो. Isn't that happens with all of us? Okay, IL&FS crisis भी था उसमें. See, when you're doing investing, there are a lot of tools available. If you want to do investing, obviously mutual, beautiful tool. You have PMS, you have AIF, you have other category of avenues available. But for trading, if there's any tool, अभी एक SEBI introduce कर रही है SIF, which is basically a quasi trading kind of a mutual fund, जिसमें आप shorting के भी opportunities आपके पास रहेगी, but still it's too new to talk about. Because there's no, anything की performance history क्या है, how they're going to move, what will be the regulation, how much, everybody still, there are only 2 AMCs which have even launched the SIF so far. I think SBI and HDFC are there are 2 AMCs which have launched so far. So far, I'll say, for trading, what is the tool or what is the mechanism available? You're the only mechanism. So there's no other third-party help you can take for trading. Good, at least we are talking in 2025. I remember I've done a program with WIRC in 2019 when I spoke to the organizers that, what the topic I should pick. So I said, I picked up something, more of a technical topic. And he said, no, technical, it's not technical, I wanted to discuss some strategies. So WIRC के कुछ committee members बोले, no, you start with the very basic. First explain what is technical analysis. This was 2019. At least 2025 में हमको technical analysis क्या है और क्यों अच्छा है ये discuss करने की ज़रूरत नहीं है. Now at least that has got a recognition. So still I'm just going to cover in a very short way. Fundamental tells us what to buy. Technical tells us when to buy it. So yes, you have to design your portfolio. You have to have your watch list of the portfolio based on the fundamentals. But when to buy and when to exit, that should be done by way of technicals. So key thing which we see in technicals or the key pillars of technicals is obviously the price. There's a belief that price have all the known information about this, and you can see that, whether it was the IAX, so कोई insider news था, वो भी getting reflected. Whether a stock is going out of F&O, that is also getting reflected. That's why there was a shorting in Navin Fluoro. So price holds all the possible information which is
impacting the stock is already there. So 3 pillars, obviously price, volume and time of technical analysis. Market balances between liquidity, sentiments and valuations. So yes, when we do a technical analysis, we see a zone of overvalued and oversold and overbought. So that defines as the sentiments. Institutional behavior. So with the help of technical analysis, we can easily gauge the institutional behavior. Open interest is one such tool which can easily tells you what the bigger players are doing into the market. I strongly believe in this statement, but however, I think there's one mistake in this statement. Can anyone highlight what is that mistake? All you need is one pattern to make a living. इस statement में एक छोटा सा mistake है. कोई बता सकता है क्या है वो mistake? No. Any other? No, the mistake is all you need is one pattern to make a living नहीं होगा. It should be to create a fortune. अगर even if you excel one pattern, that is good enough to create a fortune for yourself. Living is a very understated word, I'll say. So let's discuss some, use case before we jump into the strategy part. So this is a data of a city, 2 cities. So data of city A, what does it look like? 36, 37, 38. So whenever we have to go anywhere, whenever we have to plan for any trip, what is the first thing we do? Whenever we have to go on holiday or have to go, we have to travel anywhere. आपको 2 दिन के business meeting के लिए जाना, आप क्या देखोगे सबसे पहले? How's the weather? And accordingly you'll pack your clothes. So what does this city looks like? Hot. So it's the 15 count of temperatures I've taken. What is the mean? Means the average. What is the average of the city? 41. What is the standard deviation? Standard deviation is when we have one standard deviation, we can say with 70% or 68% probability कि इसका range क्या रहेगा. So what is the range we are getting? 41 plus 7 and minus 7 अगर हम करेंगे तो हमको एक range मिल जाता है. So what is the range? 48 and 34. So we are getting with at least some probability theory, with some probabilistic number, we can say the city का temperature कितना रहेगा? 48 and 34 के बीच में. What does the city looks like? Hot or cold? Hot. Can we call it Nagpur for the sake of simplicity? If I have to go to Nagpur in the month of say May, and if I'm carrying all my sweaters, all my overcoats, and I'm wearing it, whom should I blame? नागपुर में मई में जाकर मैं स्वेटर पहन रहा हूं, मैं किसको ब्लेम करूंगा? वहां के आईसीआई प्रेसिडेंट को, वहां के मेयर को, वहां के एमपी एमएलए को? कैन आई से दैट सिटी के सारे सीए इज रिग्ड? कैन आई से देयर इज अ ऑपरेटर इन द सिटी? कैन आई से दैट? कैन आई से ये तो सट्टा है? आई कांट. ओके, होल्ड दैट, होल्ड दैट थॉट. So for the sake of simplicity, can we call the city as hot? And stock market में हम 2 terms use करते हैं, bull and bear. So can I call this city as bull? Okay. City B, temperature, what does it looks like? 26, 27, 20, even 16 and 15. Same similar count, 15. What is the average temperature of the city for last 15 days? 22. But we never see the average, we always take a range. What would be the range? So what is the standard deviation? 6. So what can be the upper range? 28 and 16. So can I call this city as cold or pleasant? Can I call this cold and pleasant? Can I call this city as bare? Okay. इसमें I carry all my summer collection and city temperature drops to 16.
Can I call the city का mayor as rigged? Can I do that? अगर मैं किया तो कौन गलत होगा? मैं? ठीक है. Park this thought. Yeah, I mean Celsius. Yeah. Okay. No, Celsius. We use Celsius mostly in our this. Okay. So let's jump to the bell curve. This is very famous bell curve used in General Electronics. They have a very clear HR policies that they fire the underperformer और लास्ट 10 जो आ रहे हैं उनको आप फायर करते थे एंड दे यूज टू हायर द और गिव द बोनस टू द एक्सेलेंट परफॉर्मर. So say you are an employer or a owner of a company, CEO of a company, you have two employees. One is Mr. Kapoor and another is Mr. Kotak. आप किसको प्रमोट करोगे और किसको फायर करोगे? कोटक को प्रमोट करोगे और राणा कपूर को फायर करेंगे. लेकिन हम पोर्टफोलियो में क्या कर रहे हैं? यस बैंक को ऐड किए जा रहे एंड पुरी एंड कोटक को फायर कर रहे. लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. लेट्स से यू हैव मिस्टर अनिल एंड मिस्टर मुकेश. किसको हायर करोगे और किसको फायर करोगे? बट हम पोर्टफोलियो में क्या कर रहे हैं? एडीएजी ग्रुप के सारे शेयर्स है हमारे पास. अनिल अंबानी के पास भी जितने नहीं होंगे उससे ज्यादा हमारे पास है. उन्होंने तो एक आधे में एग्जिट भी कर लिया होगा. बट वी आर स्टिल होल्डिंग दैट. वी हैव पोर्टेड आवर नंबर फ्रॉम आइडिया टू भारती, बट वी आर स्टिल होल्डिंग आइडिया इन आवर. इनफैक्ट वी हैव पोर्टेड भारती टू आइडिया. क्यों? भारती तो चल गया है, इसने तो अंडर आउट परफॉर्म कर लिया ना इस साल, तो नेक्स्ट ईयर अंडर परफॉर्म करेगा. भारती इतना चल गया तो अभी नहीं चला. ऑब्वियसली जो नहीं चला वो चलेगा ना नेक्स्ट ईयर. तो अनिल तो काम ही नहीं किया 10 साल से, तो इस साल तो काम करेगा ही. यस बैंक कैन बी द नेक्स्ट HDFC. DHFL कैन बी द नेक्स्ट, आई डोंट नो, Bajaj Finance. That was all story we built for ourselves. So see, this happens with everyone. Okay. And this is the approach, when we buy a ETF do a sunrise balancing. What is sunrise balancing? ETF will always going to invest in the company which is in a sunrise sector. So ETF या exchange जब हम करते हैं, buy करते हैं, so what happens? Let's take example of Sensex. What Sensex has done? Sensex has kicked out, I'll say, or removed Wipro from Sensex 30, and Zomato is part of now Sensex 30. Why is that happened? Because index or ETF, they always invest in the sunrise. Let's not get into the valuation, let's not talk about all that, but let's understand the difference between how we approach our portfolio and how the ETF is approached. What we do, we'll always going to see the sunset वाले stocks को रखेंगे and we'll always going to exit from the sunrise वाले stocks. Why? Because there's some greenery there. वहाँ दिख रहा है ना 5% अभी तक आप पे, जो 25% डाउन है उसको कैसे निकाले? Isn't it? See, this happens with everyone. I come as a third generation into the market. Okay, I have seen this all, when I was a kid, there was a common table, dinner table discussions always used to happen. Being a Marwadi, it was like absolutely a dinner table discussion in the family. कि आज ये stock चल गया, आज वो चल गया, आज ये नहीं चला. So I have seen all, and it becomes more of a thing which I ask, have a common discussion in family, कि third generation होकर भी हम billionaire क्यों नहीं है? Third generation equity market में why we are still not a billionaire? Because obviously my parents have also done the same mistakes. Or at least my grandfather have not done the mistakes, because that was a different time. He used to get stocks at the fair valuation. There was no security premium concept in that. And all the companies, whichever he has invested, they were all
profitable companies, HUL and the Hero Moto of the worlds. But that's not the case today. We are getting Lenskart and Paytm. Paytm is still better now. But we are getting those stocks in the IPO. The road to profitability is 2047. If you'll see some of the DRHP, their road to profitability is like 10 years or 20 years. So now let's understand, okay, you'll be thinking why we are talking about all this. Why we have talked about city temperature, why we are moving into a bell curve, why we are moving into stats. What I strongly believe in today's era, okay, there was a time, say when 1990s, when information was the edge. किसी के पास info है, that was the edge. But after Google came, 2000 के बाद information is no more an edge after internet. Then wisdom was the edge. कि आप information तो आप उसको analyze कर पा रहे हो, that was the edge. But with ChatGPT and with so much of AI tool, that wisdom is also not the edge. So what is the edge of 2025? Information नहीं है, wisdom नहीं है. Wisdom क्यों नहीं है? क्योंकि ChatGPT हमसे ज़्यादा होशियार है. So intelligence is not the edge, information is not the edge. So what is the edge now? Timing, I'll not say. पहले कौन करता है उसकी को थोड़ा सा elaborate कर रहे हैं. So action is the edge. ठीक है. We all know कि weight कम करने के लिए क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, डाइट करना है. डाइट कहाँ से लेना है? ChatGPT पूरा बना के दे देगा. You just put your numbers, you just put your Whoop का data, you just put your BMI. ChatGPT will give you the best nutritionist के हिसाब का diet plan. But why still the people are obese? Because action. So action is the edge today. और action लेने के लिए what is the most important thing? You have to set your context right. Content is too much available in today's era. So action आपका तभी आएगा जब आपका context right होगा. If you know why you're doing something, you will not be able to take the action. Okay, this is a beautiful book. Find your why. If I strongly recommend reading that book. Find your why. WHY. ठीक है. मैंने किसी ऐसे ही सेशन में पूछा था, मेरे को सेशन के बाद आके किसी ने पूछा, सर वो आपने कौन सा बोला था, फाइंड योर वाइफ वाली बुक. बोला इसीलिए आजकल मैं जैसे ही वो बोलता हूँ उसके बाद आई राइट दैट. Find your why. Okay. Let's discuss this probability density curve, जिसे हम बोलते हैं bell curve. Okay. What is this bell curve? It's a statistical tool used in finance, finance में हम risk return calculate करने के लिए करते हैं, used in healthcare. Healthcare में हम कैसे इसको use करते हैं? We see the normal range. आपको BP का medicine कैसे दिया गया है? Doctors how did they decide कि 128 is the right BP? By seeing the normal, they take a sampling of say 500 people. उनका जो BP आ रहा है, they say this is the normal range of BP. इसके beyond ऊपर नीचे जो भी है, that is the high or low BP. Okay, it is used in manufacturing. How it is used in manufacturing? In your entire Six Sigma manufacturing या anybody who's from manufacturing or heard about Six Sigma, your entire Six Sigma is based on this one curve. It is used in education. How it is used in education? Your entire CAT exam, your entire CFA exam is scored based on this percentile. CA में नहीं आ रहा है, but I think very soon there was some discussion that even CA would be gauged on the basis of percentile rather than percentage. But many exams across the globe use this. So what does it mean? If you take a normal distributed data means जिस डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ या जिसको आप टैम्पर नहीं किए हो. आप एक नॉर्मली डेटा को कभी भी लोगे एंड इफ यू प्लॉट इट, यू विल ऑलवेज गेट दिस बेल कर्व सॉर्ट ऑफ अ शेप, विच मीन्स योर एवरेज विल बी हियर. अगर आप एवरेज से एक स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएट करोगे, सो यू विल गेट योर 68% ऑफ योर डेटा सेट. तो 68% डेटा कितने स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा? 1 standard deviation. So 1 standard deviation will give you how much data set? Let's say for
सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 68 को राउंड ऑफ करके 75 कर दे रहे हैं. So one standard deviation will give me how much data set? 70. 2 standard deviation will give me how much data set? 95. तो अगर मैं 95% डेटा सेट को पकड़ूंगा, so that will cover my 2 standard deviation. Class 7th 8 का एक मैथ्स है, it's not very high funda maths. Okay, please bear with me for some time before I reveal the strategy. But this is far important. See, strategy I can give you in 5 minutes. But अगर उसके पीछे का मैथ्स एंड साइंस आपको नहीं समझेगा, आई एम श्योर आप मंडे को अप्लाई करोगे, ट्यूसडे को आप बोलोगे छोड़ दो यार, वो जो चल रहा है वही सही है, या वो जो व्हाट्सएप पे टिप आया वही सही है. So sorry. 5-6 cars needs to be shifted from down. There is a marriage function down. So car number 1626, 1018, 6296, 6294, 5827 and 7887. The car owners, please, you will have to just go down for a few minutes and you will have to shift the car. Some marriage function is there, so that is the reason. Thank you. So sorry. So yes, this is very important picture. Okay. If we just turn this picture, we're going to get our indicator for the day. If we just tilt this picture, we're going to get the indicator for the day. Okay. We all have seen this notification so far. I mean, we have all have seen this notification and we've already bugged also by this notification. What this notification says by SEBI? 90% of the investors are losing money, traders are losing money, 95% are still not making, in fact, I'll say after all the taxes, just only 3% of the people are making money. My question is why? Why is that people are not making money in stock market? I can understand CAs are not making money, that is okay. No, it's not me who's saying that. There's a study happened in US and they say out of all the professions, there are 2 professions who don't make much money or who don't beat the index. That is, one is CA and another is doctor. So they underperform the market, they underperform all the other profession. So मैं समझ सकता हूँ CAs नहीं कमा रहे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, but why others are not also making money? Do you want me to elaborate why CAs are not making money? Okay, ये मैं नहीं, उस बुक की मैं फाइंडिंग बता रहा हूँ. See, these are the 2 professions which are cash rich profession, CAs and doctors. Okay, बाकी कोई भी profession में से if you are running a manufacturing, you might be, your net worth might be increasing, but it might be going into the stocks or your manufacturing plant or new factory or new machinery. But generally CAs and doctors are the cash rich profession, or the entire receipts are in cash. Cash means cash and balance. Secondly, the most respected profession, CA and doctors. Nobody has the authority over you. So your client listens to you, your staff listens to you, you have a great authority in that society. घर पे छोड़ के आपका कहीं भी stop loss नहीं लगता. So you have that, elevated ego that you are always right. That मैंने अडानी का एक लॉट शॉर्ट किया है तो अडानी को गिरना ही है. अडानी जी कितना भी कुछ कर ले, अडानी तो गिरेगा ही. और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद मैंने अडानी लॉन्ग कर लिया है, so now अडानी has to go up, irrespective of whatever institution is selling. My one lot is heavier than the thousands of crores institution is buying or selling. Okay, so that's why psychologically CAs have that problem with the market. That's why CAs, US में study हुई थी, so obviously it was a CPA and the doctors don't make money while trading because of one main reason is the psychology. Okay, we don't have a habit of listening no. स्टाफ ऐसा नहीं आके बोल सकता सर नहीं हो रहा, डेडलाइन है, आप क्या बोलोगे 12 बजे तक रुक काम कर, ना इज नॉट, वो बोलेगा एग्जाम है तो बोलेगा क्या फर्क पड़ता है.
नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देना, अभी तो 3 अटेम्प्ट है. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. नाउ सीएस का तो समझ में आ गया, बट वाई पीपल आर नॉट मेकिंग मनी. ऐसा नहीं है कि जो 50 या 95% लोग हैं इनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता या इनको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता. आई विल अज्यूम एटलीस्ट 50% ऑफ देम नोज सम सॉर्ट ऑफ स्टडी, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस. व्हाई दे आर नॉट मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग? द आंसर इज द वे दे आर यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग. हाउ मेनी ऑफ यू नो टेक्निकल एनालिसिस हियर? वाओ, दैट्स रियली बैड. Very few people. How many of you are trading? Oh, that's more bad. Only 5 hands. Okay, I do a lot of sessions. I have done sessions with IMA, that is Indian Medical Association, and I have done 3 sessions with IMA so far, Nasik, Pune, and one was in Delhi. तीनों जगह मैंने एक क्वेश्चन पूछा था. At least 80 to 90% doctors raised hand. That they trade in F&O actively. And this is what we are talking in Bombay. CAs के community में कि whether they trade, so it can be 2 things. One, that's really sad condition, or we all are lying here. If you're not trading, that is really bad, because we are the most well-equipped guys to trade. I mean, jokes apart about our psychology, but we understand the market, we understand the psychology, we understand the economics, we understand the balance sheets, we can read the data, and we are rich. So we have all the rights to be trading. Okay. And if you are lying, then it's okay. So coming back to the technical analysis, and that is again second thing, which was like we are not using technical analysis. It is the most, I'll say, it is as good as economics. मैंने एक other session लिया भी है कि how technical analysis and economics are same. I think you'll probably one of the ICF platform have taken that session. Coming back, why people are losing money even after doing technical analysis? So technical analysis या market में 2 phases होते हैं. What are the 2 phases? One is trend. What is the other phase? Sideways. Okay. So there are basically 2 type of strategies. One is trend following, another is a mean reversion. What happens? Why people are losing money? Because they learn one pattern and they use it for both the markets. भले वो ट्रेंडिंग मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो, वो उसी स्ट्रैटेजी को, उसी इंडिकेटर को अगर उन्होंने RSI सीख लिया है, उन्होंने MACD सीख लिया है या कोई एक पैटर्न सीख लिया है, they are using that same pattern in both the market condition. There are thousands of indicators for trend following, and similarly thousands of indicators which are for mean reversion. अब ट्रेंड फॉलोइंग का कोई भी इंडिकेटर मीन रिवर्जन में यूज कर लो, व्हाट विल गोना हैपन? ट्रेंड फॉलोइंग का कोई भी इंडिकेटर आप मीन रिवर्जन में यूज कर लो, क्या होगा? चाय अच्छी नहीं थी क्या? कड़क नहीं थी? स्टॉप लॉस बजेगा. सिमिलरली मीन रिवर्जन का आप कोई भी इंडिकेटर ट्रेंड फॉलोइंग में यूज कर लो, स्टॉप लॉस होगा. ठीक है. एंड यूजुअली जो भी नया नया ट्रेडिंग सीखता है उसका फर्स्ट या उसका व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दे लर्न, दैट इज द ट्रेंड फॉलोइंग और द ब्रेकआउट्स. बट हाउ मच टाइम मार्केट स्टेज इन द ब्रेकआउट जोन और ट्रेंड जोन? 30% टाइम. सो सिर्फ 30% टाइम ही रहता है जब मार्केट ट्रेंड में रहता है, एंड 70% ऑफ द टाइम मार्केट इज यूजुअली साइडवेज. वी हैव सीन निफ्टी का चार्ट, वी हैव सीन रिलायंस का चार्ट. व्हाट दे आर डूइंग? एक साल से दे आर ट्रेइंग साइडवेज. आप कोई भी बड़ा ब्रेकआउट चेज करो, निफ्टी में लॉस हो रहा है. ओके, लेट्स जंप टू द बॉलिंजर बैंड. सो बॉलिंजर बैंड इज बेसिकली 3 lines which comprises of your upper band and 2 lower bands, upper band, lower band, and a middle band. Typically your upper band and the lower band are your standard deviation, one moving 2 standard deviations, and your middle line is your 20-day moving average. Let me just quickly cover the theory part and we'll jump to the charts to understand that. Approximately 95% of your price action happens between those 2 bands. Why 95%? Because it's a 2 standard deviation line.
Okay. Two very important concepts in Bollinger Band. Bollinger Band squeeze and Bollinger Band burst. So when market is trending, there will be a Bollinger Band burst. When the market is sideways, there will be a Bollinger Band squeeze. Now let's jump to the charts to understand this all. Give me a second, give me open my... How about I give you one strategy जिसमें कभी लॉस नहीं हो? Come all the way from Pune, आज और कल गांधीधाम जा रहा हूँ तो in transit बॉम्बे में हूँ. How about I give you one strategy जिसमें कभी लॉस नहीं हो? How many of you want that? ये भी इसमें भी हाथ नहीं उठा रहे. अरे यार इतने पैसे हैं लोगों के पास, ऐसी स्ट्रैटेजी भी नहीं चाहिए. ओके ठीक है, तो बिफोर वी डिस्कस द चार्ट्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं. लेट्स हैव थोड़ा सा आप फ़ोन वोन रख दो अपना साइड में. सर जी फ़ोन, वी आर डिस्कसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. होल्ड. Let's take another deep breath. Hold. Let's take another deep breath. क्या 3 बार inhale भी नहीं कर पा रहे हो? See, when you cannot live, I mean, there's no life without inhaling and exhaling. So there's no trading without profit and loss. So that is part of the game. Like inhaling and exhaling is part of the game. All we have to do is inhale more oxygen and exhale more carbon dioxide. वैसे ही प्रॉफिट बड़ा खाओ और लॉस छोटा लो. दैट इज द होल गेम ऑफ ट्रेडिंग. लेट्स जंप इनटू सम चार्ट्स. गिव मी अ सेकंड. So we discussed which indicator? कौन सा इंडिकेटर अभी हमने डिस्कस किया था? Bollinger Band. Okay, so let's plot that. Bollinger Band. So Bollinger Band में कितने लाइन थे? 3 लाइन थे. Your first line is +2 standard deviation -2 standard deviation, and this is your 20 period moving average. 20 period moving average. It can be daily, weekly, hourly, जो भी आप चार्ट पीरियड यूज कर रहे हो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है. हाउ मच डेटा सेट इज कवर्ड बिटवीन दीज 2 लाइन्स? 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स कितना मेरा डेटा सेट? 70 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स हाउ मच? 95%. तो इस डेटा सेट के बीच में कितना कवर हो जाएगा? 95%. Okay. Just a second. How many of you, I mean, ठीक है आप टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, but how many of you go to YouTube to learn anything? Anything. कुछ भी आपको लर्न करना होता है तो यूट्यूब पे जाके लर्न करते हो. स्टॉप डूइंग दैट. दैट इज स्टॉप डूइंग दैट. ठीक है, यूट्यूब इज द वर्स्ट प्लेस टू लर्न एनीथिंग. व्हाई? वन, यूट्यूब एल्गोरिथम्स आर बिल्ड दैट वे कि वो सबसे जो बकवास चीज़ें रहेंगी उसी को प्रमोट करेंगी. ओके, इट विल नेवर गोना प्रमोट थिंग्स विच आर वैल्यूएबल और गुड. इट इज मेंट इन दैट वे. ओके, एंड you'll always have clickbaits. Those like, मैंने इतना रिटर्न कमाया, this quick rich scheme, something like that only will always get promoted into the YouTube.
अगर आप सी व्हाई आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ यूट्यूब वीडियोज़. माई 7-year-old डॉटर कैन ऑल्सो मेक अ यूट्यूब वीडियोज़ एंड उसके वीडियोज़ में मेरे से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं. एंड वो कुछ भी ऐसा डूडल कर लेती है, कलर उसका वीडियो बना देते हैं, उस पर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं. एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई 15-year strategy, nobody wants to watch that. So that's the case with every, we have seen कि एक चाय वाला and the Indian hockey team was there in the airport and people were going crazy for the चाय वाला and clicking the selfie. And hockey team को कोई recognize भी नहीं कर रहा था, जबकि उनके पास उनके पूरे हॉकी के गेयर्स थे और वो जीत कर आए थे कहीं से. सो दैट इज द प्रॉब्लम विद द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज इंटायरली बिल्ड कि आपके बोर्डम को खत्म करे, आपको एंटरटेनमेंट दे. आपको ये सेशन बुरा लग रहा है, आप मोबाइल निकालोगे, इंस्टाग्राम रील देखोगे. दैट इज हाउ द एंटायर एल्गोरिथम इज बिल्ट. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू रीड एनीथिंग, अंडरस्टैंड एनीथिंग, go and read books. If you really want to learn anything, go and read books. That's the golden way of carrying gathering a wisdom. And I can say it with a lot of confidence क्योंकि मैंने 4 साल पहले एक बुक राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. ChatGPT आ गया, फिर भी मैं फर्स्ट चैप्टर से आगे नहीं निकल पाया. So it is very tough to write a book. It takes 7-8 years of effort. Anybody who has written a book, I have a huge respect for them. So why I am saying this? Because YouTube पे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि बस बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे आ गया, सेल कर दो, एंड नीचे आ गया तो बाय कर दो. Yes, they will going to show you some cherry-picked examples because it looks sounds very good ना. यहाँ पर आया, इतना easy है, बस यहाँ पे आया, खरीद लो, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बेच देना, वापस यहाँ आएगा, खरीद लेना, वापस यहाँ आएगा, बेच देना. It doesn't work in that way and things are not that easy. अगर इतना ही ईजी होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता. आई वुड हैव बीन ऑन सम माई प्राइवेट आइलैंड पे मैं बैठकर आराम से चाय पी रहा होता. चाय भी क्यों पीऊँगा प्राइवेट आइलैंड पे. So yes, YouTube videos will not teach you that, but it's not that easy. There are a lot of good books to start up. Read Trading for Living. Trading for Living by Dr. Alexander Elder. See, trading is 70% psychology, 30% only strategy. इसका मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट का सेशन अभी अटेंड मत करो. साइकोलॉजी तो है 70%. 70% साइकोलॉजी. एंड डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर was a psychologist turned into trader. So entire book is designed in a way जहाँ साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया compared to strategies. Yes, he has described all the strategy, all the indicators, but that is a very golden and classic book, Trading for Living. पूरा CMT का करिकुलम उठा के पढ़ सकते हो. पूरा करिकुलम अवेलेबल है ऑनलाइन में. CMT इज द कोर्स फॉर सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन. सारे के सारे बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन. कमिंग बैक to the point that it's not that easy, okay? What we're going to do is, we're going to plot one more indicator. इसी पे ही we're going to add one more Bollinger Band. And we're going to just change some of the settings. So what setting we are changing? Instead of 2 standard deviation, we are putting it 0.7. और सिर्फ इसको हम रेड कलर मार्क कर देंगे 0.7. Okay. Now we have 4 zones. What are the 4 zones? Where are the 4 zones? Obviously, this is my zone 1. This is your zone 2. This is your zone 3. And this is my zone 4. So, ये जो पूरा area है, this is my zone 1. What settings we have used? We have obviously taken 2 standard deviation and 0.7. Why 0.7? 2 standard deviation कितना % डेटा सेट कवर करता है? 95. 1 standard deviation कितना कवर करता है? Approximately 70. It's 68, but approximately 70. I mean, my firm, we wanted to use 50% data set कहाँ कवर होता है. So we just extrapolated
50% डेटा सेट, इट इज कवर्ड अंडर 0.68, तो राउंड ऑफ किया 0.7, दैट्स वाई 0.7 इज यूज्ड. ठीक है, 7 इज नॉट माई लकी नंबर, आई एम नॉट बॉर्न ऑन 7, और कोई कनेक्शन नहीं है 7 का. Okay, so that's why we are using two Bollinger Band, one is 0.2 and another is 0.7. Now how do we have to trade this? Simple mechanism. अगर मार्केट में कोई होली ग्रेल है, होली ग्रेल मीन्स समथिंग गॉड सेंट, कोई एकदम मैजिकल, कोई जादुई पत्थर या कोई अलादीन का चिराग, सो दैट इज ओनली एंड ओनली योर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. लोग बोलते हैं ना मार्केट में होली ग्रेल नहीं होता, मार्केट में होली ग्रेल है, एंड दैट होली ग्रेल इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस? You analyze a chart on a higher time frame, find a trend on a higher time frame, go on a lower time frame to find a good suitable entry or exit strategy. Okay, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे linearly up नहीं जाता, market will go like this. So if you identified on a longer time frame, if some stock is in trend, you can go on a smaller time frame to find a best suitable entry opportunities. So now, what is the entry opportunity? Entry opportunity is any stock which is moving into zone 1 is your buying stock or a stock where you have to go long. So can we call this zone 1 as bull zone? And जो हमारे केस में हमने जो पढ़ा था, मतलब जो स्लाइड देखी थी, उसमें क्या था? हॉट सिटी, नागपुर. अगर मैं बुल जोन में जाकर इफ आई एम शॉर्टिंग सम स्टॉक, whom should I blame? Whom can I blame? Operator? Say a stock like, let's say, give me a stock which has fallen a lot, 6-7-8 महीने पहले. पेटीएम, हाँ पेटीएम लेते हैं जब आईपीओ के बाद का पॉइंट पे. एक मिनट, अडानी ग्रुप के भी कोई भी स्टॉक ले सकते हैं. लेट मी डिलीट सम दिस, लेट मी डिलीट फॉर दिस सम ऑफ द अननेसेसरी डेटा. हाँ, लेट्स से पेटीएम. पेटीएम नहीं होगा, बॉलिंजर बैंड नहीं बना होगा उसका आईपीओ के बाद का. गिव मी नेट वेब, जी देखते हैं ना. Okay, it's a weekly chart. Let's take it here. Stock moved into zone 4. Zone 4 is a bear zone. What do we have to do? हम क्या करते हैं? We become a Superman, Robin Hood, Spider-Man, whatever. ये जितने Marvel heroes है, we become that and we try to safeguard the market buy करके. अगर आप इस जोन में कभी भी buy कर रहे हो, whom should you blame? Any stock, if you're buying here, operator है market में, isn't it? A stock which is continuously moving in zone 4, what do you have to do? Find a good shorting opportunity on a smaller time frame. It's as simple as that. Higher time frame पे analyze करो, smaller time frame में find a shorting opportunity. How you have to find a shorting opportunity? Use any trend following indicator. When a stock is in zone 1 or zone 4, it's a trending stock. Use any trend following indicator, whether it's even a moving average crossover or a long built up on open interest or your parabolic SAR ka breakout या RSI moving up, RSI going above 60, they all will gonna work. All you have to do is find a trending stock and use a trending indicator. That's it.
Similarly, stocks which are, okay, it may not be sounding that easy. Let me explain to you with example. Say a stock like HL. Cannot use the recent charts because of the SEBI regulation. But let's see a stock like HL, Hindustan Aeronautics. Stock ने कब breakout दिया? Zone 1 पे. Somewhere around here. Zone 1 का breakout कब था इसका? जनवरी 2021. जून 2021, सॉरी. जून 2021. प्राइस वॉज 350. वहां से स्टॉक मूव किया कहां तक? ऑलमोस्ट 5800. हाउ मेनी ऑफ टाइम्स स्टॉक मूव्ड इनटू जोन 4? 2024 मई में, मतलब जून में ही आप समझ लो एटलीस्ट. मई जून में 2024, 3 साल के पीरियड में 21, 22, 23, 24. एक बार वेरी ब्रीफली, दूसरे बार वेरी ब्रीफली एंड तीसरे बार वेरी ब्रीफली, एंड दैट डिडंट सर्वाइव देयर. 2 वीक का भी क्लोजिंग नहीं था. एनी स्टॉक विच इज मूविंग फ्रॉम 350 टू 5800, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक मनी बाय गोइंग लॉन्ग इन दैट स्टॉक. कोई स्टॉक 350 से 5800 तक का रैली किया है या 6000 तक का रैली किया है, हाउ डिफिकल्ट इट इज कि उसमें से आप 5, 7, 10% निकाल सको. आई एम नॉट सेइंग 350 से 5800 तक की रैली कर सको. हाउ डिफिकल्ट इट इज? हार्ड, इजी, नॉट पॉसिबल? यू आर सेलिंग अस सम ड्रीम. हाउ डिफिकल्ट इट इज? 350 से 5800 की रैली में आपको सिर्फ 50 रुपए नहीं मिल सकते थे. इवन अगर आपने कहीं 500 के रेंज में भी पकड़ा होता था, 50 रुपए इज इक्वलेंट टू 10%. 5-7% निकालना and to chase the momentum and to actively trade those stocks is not that difficult. And these are F&O stocks, so you have a leverage also. कौन से बिजनेस में आपको 8% पे पैसा मिल रहा है without any collateral? This is the only business. When you're buying a F&O, फ्यूचर का लॉट, डू यू पेइंग एनी कोलैटरल? 8 लाख 10 लाख का लॉट है, आप कितना पे कर रहे हो? 2 लाख रुपया. व्हाट आर द गेन्स यू आर गेटिंग ऑफ? 10 लाख के पूरे लॉट पे आपको गेन्स मिल रहा है. हैव यू पेड एनी कोलैटरल? आप 1 करोड़ का स्टॉक लो, सिर्फ 20 लाख रुपए देने हैं. 80 लाख रुपए रिस्क फ्री मिल रहा है आपको. इफ यू नो द स्ट्रैटेजी राइट, दिस लॉट ऑफ मनी यू कैन मेक हियर. अब ये मत पूछना व्हाई आई एम नॉट अ बिलियनेयर. It's in the making. आएगा, वो भी आएगा. So coming back, I can give on multiple examples of both long and short side stocks. Where, see, why I'm telling you this, because you cannot do active investing and make money now. Gone those days. Gone those days, जहाँ पे आप buy and hold करके पैसा कमा सको. Why I'm saying this? Because we have discussed Black Swan events. हर साल में से 2 इवेंट्स होते हैं जब, अभी तो कुछ इवेंट नहीं हो रहा है, FIs ऐसे ही बेच रहे. आप बताओ, लास्ट ईयर सितंबर से मार्केट गिरना चालू हुआ था 2024 में, मार्च तक गिरा 7-8 महीने कंटिन्यूसली, 25 साल का रिकॉर्ड टूटा. उस बीच में क्या इवेंट था? देयर वाज नो इवेंट. वी इनफैक्ट, देयर वाज अ थर्ड टर्म ऑफ द कंटिन्यूइंग इलेक्शन, मतलब कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट. There was no bad event. सबके numbers ठीक आए थे. Trump was friendly that time. At least he was friendly. He was pretending to be friendly. FIs was selling. Okay. In fact, that was positive. That was positive for India. Because you are getting a right-wing government in US who's not, who's more capitalist. So that was supposed to be positive. His claim was that he'll, close the wars. So that was supposed to be good. But what happened during those 7 months? Market tanked. So the point is, आप buy and hold करके पैसा नहीं बना सकते अब मार्केट में. Gone those days कि आप अपना बिजनेस लैंडलाइन फोन से चला सकते हो. You have to evolve.
So now the time is you have to be with the momentum. You have to trade the momentum even if you are holding something long term. जैसे TCS आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, लेकिन क्या हुआ 4,500 का 3,000 हो गया है. आपने समझ लो हाइपोथेटिकली लेट्स से यू बॉट एट 4,500 और 4,000 रुपीज. नाउ इट्स डाउन 33%. पहले उस स्टॉक को 33% नहीं 50% यहां से चलना पड़ेगा, तब वो आपका लॉस कवर होगा. इट्स डाउन बाय 33%, लेकिन उसको अभी चलना कितना पड़ेगा? 50% का गेन, 50% चलेगा तब तो आपका भाव आएगा. और 3 साल से अंडर परफॉर्मेंस है तो 30% वो भी आप जोड़ोगे, 4,500 के हिसाब से आप 30% वो भी जोड़ोगे जो ब्याज गया ना, तो और 30% मतलब 4,500 का 30% कितना हुआ? 1,500. यहां से स्टॉक डबल होगा तब आपके बैंक रिटर्न आएंगे, और वो भी कब? कल, क्योंकि 3 साल हो गए ना. तो अगर वो 6,000 होगा तब तो आपके बैंक रिटर्न मिलेंगे. एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कल 6,000 हो सकता है टीसीएस? कल छोड़ो, 1 साल में भी हो सकता है. किसी का है कन्विक्शन? सर आप लॉन्ग करो, मैं शॉर्ट करता 6,000 पे, या ऑप्शन का अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. आप जो प्रीमियम बोलो मैं देने के लिए तैयार हूं. सो कमिंग टू द पॉइंट, even if you're holding any stock for a long term perspective, but considering the disruption what is happening in the market, how easily our industry is getting disrupted, you have to be aligned with the momentum, you have to align with the price action, you have to exit those stocks which are not performing. So आपको by way of Bollinger Band, by way of technical analysis, at least you can plan your exits कि कहाँ पे टारगेट हिट करना है या टारगेट लेके प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे उसको स्टॉप लॉस रखना है. 5. I can go on examples wise तो continuously, but before that I have just to cover 2 things. Okay, which higher frame you have to take? I'll just cover that. Let me duplicate. Okay. Very important question. Okay. Okay. What higher time frame do you have to take? So if you are holding a stock, say if you are a swing trader, okay, so you should do all your analysis based on monthly charts or weekly charts. Okay, so that is your analysis time frame. Analysis time frame. अगर आप swing trader हो, swing trader मतलब somebody who's taking a position today और 8-10 दिन 15 दिन या 2 हफ्ते के लिए उसको रखना है. Okay, so आप monthly and weekly charts पे analyze करो and go on a daily time frame. Use so entry and exit जो होगी आपकी entry and exits will be based on your daily time frame. अगर आप intraday trader हो, so आपका if you are say intraday, sorry for my writing, intraday trader, तो आपका जो भी analysis window होगा वो daily time frame पे होगा and your entry and exit would be say 15-minute or 30-minute charts, maximum 30-minute chart. Preferably 15-minute is the best suited intraday के लिए, but 30-minute is also okay if you are just BTST kind of trader. You are intraday come BTST trader. हाँ, because it needs some data to plot. तो immediately IPO के बाद वो plot नहीं होगा, तो 20 day का moving average के बाद वो plot करेगा. So 20 weeks के बाद ही वो plot चालू होगा. Okay. Since I cannot give you the strategy which makes you 100% profit, but how about I give you one scanner which can tell you stocks which are in uptrend or downtrend? How about that? So yes, there are 5,000 stocks into the market. You cannot scan all the stocks. Let me quickly give you a scanner. ये तो मेरा layout खुल गया. Let's go into the dashboard. I'll share the link with the organizers
WRC टीम के साथ दे कैन पोस्ट इट टू यू. So these are the stocks which has on a daily time frame entered into zone 1. तो zone 1 के stocks में क्या करना है? एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना है. Okay? अगर आपको पता चला राकेश झुंझुनवाला जी, I mean he's no more, but you know for us, for all of us, being a chartered accountant, he is a legend. अगर आप सबको पता चला कि राकेश झुंझुनवाला जी कोई स्टॉक खरीद रहे, तो आप क्या करोगे? लेट्स से रेयर एंटरप्राइजेस और रेखा झुंझुनवाला जी कल कोई स्टॉक खरीद रही है, आप क्या करोगे? हाइपोथेटिकली आई गिव यू टिप टुडे कि रेखा झुंझुनवाला जी ने कल कोई स्टॉक खरीदा है, आप क्या करोगे? बाय करोगे. एटलीस्ट शॉर्ट तो नहीं करोगे ना. ओके. सो a candle like this is not made by people like you and me. It is made by people like Vijay Kedia, Rakesh Jhunjhunwala, or some institutions like Morgan Stanley or Jefferies. इनकी जब बाइंग होती है तो ऐसे कैंडल बनते हैं. ऐसे कैंडल के कभी भी अगेंस्ट जाके ट्रेड मत करो. सिमिलरली एम्बर या पीजी, ऐसे कैंडल भी मेरे और आपके कारण नहीं बनते. ये डाउन साइड के कैंडल 4%, 8%, 4% के कैंडल्स मेरे और आपके कारण नहीं बनते. ये कौन बना रहा है? सम राकेश झुंझुनवाला जी सेलिंग. सो एटलीस्ट आपको क्या करना है? उनके अगेंस्ट तो नहीं जाके ट्रेड करना है. So whenever you see such candles, call it as a RJ candle. अगर आप उसको RJ candle बोलना चालू करोगे तो एटलीस्ट आप उसके सामने वैसा शक्तिमान नहीं बनोगे कि मेरे एक लॉट से मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को कल चेंज कर दूंगा. I mean see this sort of candle is a clear sign कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बेचा है. एंड विद वॉल्यूम. उसके बाद क्या होगा? सी द पॉइंट इज ऑब्वियसली इतने ट्रांजैक्शन, एक सेकंड आई जस्ट कवर दिस, इतने ट्रांजैक्शन हुए तो जितने जनों ने बेचा उसके अगेंस्ट उतने लोगों ने खरीदा भी है. बट व्हाट हैपेंड टू दोज पीपल हु हैव बॉट इट हियर? दे ऑल मस्ट बी इन लॉस. सो एटलीस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, हम अगर हमारी गलती करना बंद कर देंगे तो भी हम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं. ऐसे मेरे पापा बोलते हैं कि तेरी गलती करना बंद कर दे, यू विल बिकम गुड पर्सन. या हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम चार्ट देखना है ना. आप ये चार्ट देखो, अगर ये चार्ट ऐसा बना हुआ है तो ये ग्रीन कैंडल का कोई मीनिंग है? इसलिए मैंने चार्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया. डज दिस ग्रीन कैंडल हैव एनी मीनिंग? जब तक एटलीस्ट इस जोन को फुल नहीं करता तब तक ये है कि अभी तक ये जिन्होंने एग्जिट या शॉर्ट बनाया पोजीशन, एक तो ये F&O का स्टॉक है. आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट लाइव स्टॉक्स बट लाइव चार्ट्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली हियर. दिस स्टॉक, एंड इट केम विद अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू. देयर वाज अ न्यूज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस न्यूज. आफ्टर दैट दिस स्टॉक स्टार्ट फॉलिंग. सो आर यू सपोज टू बाय इट एनीवेयर हियर? अभी तो एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है. एंड उसके ऊपर से इफ यू विल सी, Amber has posted bad numbers. Dixon is falling. Keynes Electronics is falling. So sector tailwind is absolutely down with this stock. So it becomes a no-brainer to short such stock. And a stock which is trading at 80 ka PE pe. And contract manufacturing. हाँ, फर्स्ट जोन में गया था, मैं वही बोल रहा हूँ, ये गया था, बट वी हैव टू इग्नोर सच फर्स्ट जोन्स. सो वी कैन नॉट टेक एवरी फर्स्ट जोन. सो हम ओके, माई इंटायर सेशन आई डिडंट सेड कि आपकी जोन 1 में जाते ही बाय करना है. तब तो हम फिर HAL 350 पे खरीद लेते ना. मैं बोल रहा हूँ
कोई भी स्टॉक आपके जोन 1 में आता है तो आपके वॉच लिस्ट में बन जाना चाहिए. उसके बाद यू हैव टू सी मोर थिंग्स. सो लेट मी जस्ट क्विकली कवर दैट पार्ट ऑफ द चार्ट. So yes, zone is one part of the jigsaw puzzle. What other parts of the jigsaw puzzle you have to see? Risk management. There's no escape to that. Money management. Risk management मतलब आप कितना पैसा एक ट्रेड पे लगाओगे. Money management कितना पैसा आप रिस्क लोगे, उसके बेसिस पे आप कितना पैसा उस ट्रेड में लगाओगे. You have to see open interest, especially F&O stocks में. You have to understand the option chain. Call writers कहाँ हैं, put writers कहाँ हैं. You have to do the volume profiling. कि volume profile is a absolutely another क्या बोलते हैं chapter on its own. I'm just giving you a hint. जैसे होता है ना वो Netflix में सीजन 2 का थोड़ा सा ग्लिम्स दे देते हैं, तो सीजन 2 का ग्लिम्स दे रहा हूँ so that I'll be invited again. Coming back, volume profile is a altogether different profile which tells you how the buyers have bought. I mean, see, when we are seeing a purchase, we are seeing a purchase in two ways. Purchase can happen two ways. एक हो सकता है आप बिड लगा के परचेज करो, एक हो सकता है आप सेलर से अग्रेसिवली परचेज करो. यू गेटिंग माय पॉइंट? दोज हु हैव सीन द ट्रेडिंग टर्मिनल कैन अंडरस्टैंड. एक होता है कि आप बिड लगा के, मेरे को रिलायंस लेना है, मैंने बिड लगा दी 1500 पे, 1500 पे मेरे को मिल गया. दूसरा ऑप्शन क्या है, 1510 पे सेलर खड़ा है, 1515 पे सेलर खड़ा है, 1520 पे सेलर खड़ा है, मैंने क्वांटिटी भर के मारी, 1510, 20, 10, 15, 20 सारे सेलर्स को मैंने बाय आउट कर लिया. सो वॉल्यूम प्रोफाइल गिव्स यू डिस्टिंक्शन कि ये सेल या बाय कैसे हुआ था, वेदर इट वॉज अग्रेसिव बाय और इट वॉज अ पैसिव बाय. सो ऑब्वियसली समबडी, अगर कोई स्टॉक को भागना है तो इट हैज़ टू बी अग्रेसिव बाय और अग्रेसिव सेल. सो यू हैव टू ऐड वॉल्यूम प्रोफाइल इनटू योर दिस स्टडी. यू हैव टू यूज RS. व्हाट इज RS? रिलेटिव स्ट्रेंथ. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सेक्टर का पूरा टेलविंड खराब है, एम्बर के रिजल्ट्स खराब आए, डिक्सन अपने आप शॉर्टिंग ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है, जोन 4 में ट्रेड कर रहा है, केन्स खराब है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑलरेडी प्रॉब्लम में था. सो दैट इज योर रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ऑल्सो वीक फॉर दिस सेक्टर एंड द स्टॉक ऑल्सो. You have to do multi-time frame analysis. So these are some of that. Again, you have to use momentum indicators to add that. So it is not that कि zone 1 में आ गया तो आपको buy करना है, but zone 1 में आ गया तो आपके watch list में आ जाता है. So अगर आप यहाँ देखोगे, let's say this example, so these are the 10 stocks जो आपके watch list में होने चाहिए मंडे के ट्रेडिंग के सेशन के लिए. अब ये 10 स्टॉक में इंट्राडे में कहीं भी आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप दिख रहा है, कहीं भी आपको दिख रहा है कॉल राइटर्स बैकफुट पे जा रहे हैं, कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, कोई मोमेंटम इंडिकेटर बढ़ रहा है, देन यू हैव टू गो एंड बाय दैट. बट एटलीस्ट आपका वॉच लिस्ट तो शॉर्ट लिस्टेड हो गया ना. सो व्हाट आई डू इज आई क्रिएट 2 वॉच लिस्ट एंड आई डोंट डू इट एट 9:15, आई डू इट 3:30 ऑफ अ प्रीवियस डे. तो 3:30 बजे मेरे पास 2 वॉच लिस्ट बन जाती है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट. कि शॉर्ट क्या है, सिंपल है, जो स्टॉक्स लोअर बैंड पे आए हैं. सो ABB, Godrej Properties, Apollo Hospital, Mphasis, ITC, these are the stocks which has just moved into zone 4 trajectory. I'll going to add that. अब इसमें से ITC भी जोन 4 में आया, बट विल आई गोना शॉर्ट ITC? प्रॉब्ली नॉट. इट्स अ गुड स्टॉक, इट्स अ गुड फंडामेंटल स्टॉक. आई थिंक FMCG कैन रन फ्रॉम हियर, और एक FMCG का जो स्लगिशनेस है शायद खत्म हो जाएगा. सो आई विल नॉट गोना शॉर्ट दैट, बट प्रॉब्ली द अदर्स आई मे. बट एटलीस्ट मेरी वॉच लिस्ट क्रिएट हो जा रही है इंट्राडे के लिए, बिकॉज दिस इज अ डेली स्कैनर. यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, आई चेंज इट टू मंथली और वीकली, so I'll get my weekly or monthly scanner. So I put up monthly and सारे closes monthly डाल दूंगा तो monthly scanner बन जाएगा. And there are 2 parts to it. Okay, I have to explain this also. There are 2 parts to it. How do you have to use this? This is also important. This is the list. आप ये toggle देख रहे हो, ये बटन, ये बटन को जब आप ऑन कर रहे हो, इट इज गिविंग मी अ लिस्ट जो स्टॉक्स अभी जोन
4 में एंट्री की है. बट व्हाट अबाउट दो स्टॉक्स विच आर ऑलरेडी इन जोन 4? So you have to just close this, open this button and run the scan. These are the stocks which are already in zone 4. Amber, ABB, PG, Electroplast. These are already in zone 4. इसमें फ्रेश एंट्रेंस वाले भी है और पुराने वाले भी है. जैसे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हमने डिस्कस किया था, ये 6 नवंबर को जोन 4 में आ गया था. मतलब थर्सडे को जोन 4 में आया, फ्राइडे को ऑब्वियसली अगेन करेक्टेड बाय 3.5-4%. Scanner, I'll share the link. It's a free scanner link. You just have to run it. Obviously, it gives you a 15-minute delay data. But अगर आपको इंट्राडे भी ट्रेड करना है तो आपको ओवरनाइट का तो पता चल गया. बाकी तो आपको फिर वैसे भी इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं. एंड आई थिंक 8-10 हज़ार का सब्सक्रिप्शन है साल का. सो इट्स वेरी चीप. सो अगर आप आई एम नॉट नोवेयर एफिलिएटेड विद दिस चार्टिंग टूल. हाँ, तो उसमें आई विल शेयर यू द लिंक. I'm using Candlestick. So what I do, I'm a high frequency trader, HFT trader. We trade into Nifty, Bank Nifty options on HFT. I have a company since 2011, registered in 2011. We made software for 1 year, launched the software in 2012. High frequency software. जब algo के भी लोग को पता नहीं था, algo का ये भी नहीं पता था. Since that time we are trading into HFT. How I got into HFT, because I started working with JP Morgan and JP Capital. वहाँ पे मैं algo यूज़ कर रहे थे 2010 में. I used to trade LME and MCX, LME and CME, London Metal Exchange and Chicago Mercantile Exchange के arbitrage करते थे. So all my life I've traded spreads. So that's my specialty. I'm head of research with ProfitMart. Obviously what we do is so we do quantitative data analysis basically, and as an investment advisor we help our clients to take a more informed and right decision. So basically a prop trader and a I investment advisor. So that is what we all do in our office in business. ProfitMart is a full-fledged broker with I think 40 plus branches and 40-50,000 active clients. Yeah. Q&A. I mean, these are my credentials. You can reach out to me. By this. These are the two links which I'll share it with some of the organizers. So, yeah. Any questions on anything other than my portfolio? और कल क्या खरीदना वो भी मत पूछिएगा. हाँ, उसका लिस्ट मैंने दे दी आपको, वो डेली बताएगा आपको. ओके, वी यूज अ लॉट ऑफ AI, बट वी आर यूजिंग AI टू एज एन असिस्टेंट I'll say. Okay, and what my view is about AI is, there's a thing that AI will going to replace the jobs. I don't believe in that. People who are using AI will replace people who are not using AI. तो AI will not going to replace the job, but लोग जो AI यूज़ कर रहे वो रिप्लेस कर देंगे जो AI नहीं यूज़ कर रहे. So वो होने वाला है. Take AI as your, I'll say, assistant. आप AI को अपना assistant की तरह यूज़ करो. Give you example, recent example. Let me actually, आज की डेट में ना मैं मेरा व्हाट्सएप आप लोगों के लिए ओपन करके दे सकता हूँ, मेरा बैंक अकाउंट दे सकता हूँ, पोर्टफोलियो दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ChatGPT का अकाउंट नहीं दे सकता हूँ. इट हैज़ बिकम मोर पर्सनल. बट गिव मी अ सेकेंड, आई विल हैव टू हाईलाइट समथिंग ऑन द AI पार्ट. इसी स्क्रीन करने दो. So we use a lot of AI, but how we are using it, we'll discuss that and why it should be used that. Yeah, I'll discuss that. So
asked ChatGPT a simple question on I asked him, did Zoran Mamdani has won the New York mayor election? I asked in the morning. He said, no, it has not won, blah, blah, blah. And उसको फिर मैंने वो article भेजा कि it has won. And I asked him like, फिर वो बोल रहा हाँ, yes, it has won. So I asked him, how can you be so wrong? Then he's saying, नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई. तो he's like your assistant. We're going to do some silly mistakes. कि आप उसको blindly नहीं follow कर सकते. This is a live example. Okay. अब आप उस पर चिल्ला भी नहीं सकते हो, बेचारा है, assistant है. तो आप take his help, but you have to review the work. आप अपने आर्टिकल की, आपका आर्टिकल है ये समझ लो, और अब तो फ्री का आर्टिकल है, $4 भी नहीं ले रहा. पहले $20 मांग रहा था, फिर 4 मांगा तो बोल रहा फ्री में काम करा लो मेरे से. तो आप आर्टिकल की बैलेंस शीट पे आंख बंद के तो साइन नहीं करते हो. नहीं तो क्या होगा, एसेट के आइटम लायबिलिटी में, लायबिलिटी के आइटम एसेट्स में. तो वैसे ही आप एआई का ब्लाइंडली मत फॉलो करो. यूज इट, रिव्यू इट एंड देन यूज इट. सो देयर आर लॉट ऑफ एआई टूल्स. हर जैसे यू कैन नॉट यूज चैट जीपीटी फॉर इमेज जनरेशन. इट इज डैम स्लो. इवन इफ यू यूज सोरा और इसका जो ये है, देयर आर अदर टूल्स विच गिव्स यू रियल टाइम इमेज जनरेशन. There are a lot of AIs. Let me see. Decor AI. Gemini is more of, this gives you almost real-time image generation. आप prompt लिखोगे वो image generate कर देगा. For say PPT presentation use Gamma. मेरा PPT नहीं बना था उससे, but PPT presentation के लिए Gamma. अगर आपको code करना है तो use Cursor. तो हर particular task के लिए there's some good AI models available. So use that. How do we use AI? AI cannot trade for sure. Why I'm saying this? To give you an example, tell me how easy or difficult it is to make a driverless car. Driverless car जो कि बॉम्बे के रोड पे चला ले और बोरीवली से बैंड्रा या दादर फर्स्ट आए. Is it possible to make such car? No. But you can give a good driver with all the tools, with all the sensors, automatic car, and he can still outperform or beat many of the cars. So it is like, it is an extension to human arm. It cannot replace human arm. So we use a lot of AI, but to write the codes for us. बट हम फिर भी जो कोड है दैट गोज, बिकॉज एआई के एक प्रॉब्लम क्या है, आप एआई को कुछ कोड बोल दोगे टाइप करके ट्रेड करने के लिए, इट विल नॉट गिव यू द लॉग व्हाई इट डिड दैट. तो वो गलत भी करके आया तो आपको पता नहीं है क्या क्यों गलत करके आया, तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे. सो बेटर टू हैव योर लॉजिक. से यू हैव एनी लॉजिक, से मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, यू गो टू एआई एंड टेल हिम की राइट मी दिस कोड for TradingView. TradingView is a indicator based charting platform. उसको बोलो पाइन स्क्रिप्ट में मेरे को ये लिख के दे दे, इट विल गिव इट टू यू. वो स्क्रिप्ट को आप रिव्यू करो, पुट इन टू योर पाइन स्क्रिप्ट, रन इट, बैक टेस्ट इट, देन डिप्लॉय इट. सो दैट इज हाउ वी आर यूजिंग AI. We may be wrong. See, AI machine learning is nothing new to the market. Jim Simons, people have not heard about him. People talk about Warren Buffett. Warren Buffett का annualized return कितना है? Anybody have any idea? Less than 20%? We all agree to that? Jim Simons का annualized return कितना है? 39 years का consistent. 66%. 66% return हर साल. CAGR. He used to charge 5 and I think 5 and 20. 5% as a fixed fee and 20% या 30% as a performance fee. Still clients को 40% CAGR return मिला, and we are talking about 100 billion plus fund. So they are using AI, ML, machine learning since 1990s, early 2000. He's a maths professor, last year expired.
ब्यूटिफुल बुक मैन हु सॉल्व द मार्केट करके है. प्योर मैथमेटिशियन यूज टू डू द CIA के लिए कोड ब्रेक करता था कि रशियन इनक्रिप्टेड मैसेजेस आ रहे तो उसको कोड ब्रेक करता था. हार्वर्ड एंड ऐसे इंस्टीट्यूशंस, आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस के लिए मैथ प्रोफेसर था. सो मैथ्स PhD एंड entire his company was filled with math professors or PhDs in computer science, PhD in those sort of people. So yes, AI and ML is nothing new, but for people like us, it is still a far-fetched dream. So we cannot use it. We don't have that equipment to or that brain power right now, and computing power also. Yes. Yes, sir. So Bollinger Band is a complete tool in itself, and it is a complete system in itself. So yes, Bollinger Band can be, first use can be done for identifying the trends, zones. Second can be identifying the patterns, identifying the overstretched charts, overbought, oversold trajectories, identifying the volatility into the market, identifying whether that market is sideways or trending, identifying the patterns. So that is all new, but that will come in season 2. Yeah. Read books. We CAs हम तो पढ़े ही, मतलब बचपन से पैदा ही हुए पढ़ने के लिए, ऐसा है. Read any good books. आप CMT का करिकुलम उठा लो, पढ़ लो. आप CFA के करिकुलम का बुक्स उठा के पढ़ लो. आप इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ लो, उन्होंने भी फॉरेन का ही कॉपी किया है. I'll give you the list of the name of the books. You text me on the number. I'll give you the list of the books. So there are a lot of books. Yeah. We can have an offline discussion. Friends, capital market is one conference which till can go on and on and on. And I attend so many events. कैपिटल मार्केट इज़ वन कॉन्फ्रेंस जहाँ मेंबर्स लास्ट तक बैठते हैं, सुनते हैं. CP के लिए नहीं आते हैं, सुनने आते हैं, कुछ ना कुछ लेने आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आशीष भाई फॉर योर वंडरफुल सेशन, एंड ऑफ कोर्स टू द वंडरफुल ऑडियंस, 2 full days of national conference in capital market. Thank you for your attendance, thank you for your cooperation, thank you for everything. And one last thing before closing the event, WRC का सिग्नेचर इवेंट रीजन कॉन्फ्रेंस 19th and 20th दिसंबर को आ रहा है. इट्स द बेस्ट इवेंट फॉर नेटवर्किंग प्लस लर्निंग. मोर देन 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग देयर. So I request all of you, please enroll for the same also. Thank you once again with a huge round of applause for each and everyone. Thank you.